अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान बाबा मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है गोल्ड होम्स शो के एक और एपिसोड के साथ। ये टोरंटो 360 की तरफ से पेश किया जाता है और रीमैक्स गोल्ड इसको स्पॉन्सर करती है। गॉडी गोमन जी इसको स्पॉन्सर करते हैं। I have certain guests here, so sometime I will speak in Urdu, sometime I will speak in Punjabi, and sometime I will speak in English. One of my best friend Natali is also here. My best friend Ian Chaudhary is here, and my very old friend Mr. Gibran Slimi is also here. So they work in different capacities. We work as a team. हम एक टीम के तौर पे काम करते हैं। टीम के तौर पे आपको एक इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ कि जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं बड़ी मुस्कुराहट के साथ हम उसमें हम हिस्सा लेंगे। और नाज़रीन, आप ये प्रोग्राम ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप मेरे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। यू कैन कॉल मी सो आई कैन इंट्रोड्यूस ईच ऑफ देम। अगर कोई आपको सर्विसेज चाहिए, कोई लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में, मॉर्गेजेस के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करा सकूं। हम बड़ी कैंडिड डिस्कशन करेंगे मुख्तलिफ टॉपिक से और मैं कोशिश करूंगा कि हर टॉपिक पे आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर ईएन चौधरी टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ सर। इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपने इंट्रोड्यूस तो कर दिया है। माय नेम इज ईएन चौधरी एंड आई एम अ मॉर्गेज एजेंट विद सेंटर मॉर्गेजेस एंड आई डू फर्स्ट सेकंड मॉर्गेजेस, प्राइवेट लेंडिंग राइट नाउ इन होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट बेसिकली मैं कर रहा हूँ आजकल। अच्छा, हाँ जी, जो करंट सिचुएशन इस वक्त हुई भी है, people need money, so अगर आपको फंड्स की ज़रूरत हो तो I can get you up to 300K as a home equity line of credit. Yes, Natalie, introduce yourself, please. A little bit loudly. My name is Natalie. I'm also a mortgage agent. I work under Mortgage Alliance. I specialize in commercial and residential mortgages. I have access to a multitude of lenders, including some of the major banks. So placing you somewhere shouldn't be an issue. And yes, I'd love to work with you. Okay. Gibran sir. Hi everybody, this is Gibran Salimi. I'm an insurance broker. I do home auto insurances and tenant insurance. If somebody is buying a new house and he needs insurance, he can directly call me or call Baba Ji. ये हमारे बड़े हैं, इनका नंबर तो सबको ही पता है। मेरा नंबर 6478897116 है। New drivers are welcome. That's all. Thank you. अच्छा जी, शुरू करते हैं जी, डिस्कशन शुरू करते हैं। नटाली, आई विल स्टार्ट फ्रॉम यू। ओके, you are expert in commercial and real estate mortgages. So, do you want to introduce your products a little bit? How you work? How you do the work for if somebody comes to you for a commercial mortgage or residential mortgage? So what things you need? Well, I'll need like an Equifax report. I will need the notice of assessment, anything to do with your financial background, so I know exactly how much you can qualify for. I also do refinances in the home equity line of credits as well. In which case, yes, we'll need to see mortgage statements and things like that. But as long as you're willing to give the information, I would be more than happy to go through the finances, see what you will qualify for, and then go from there. Okay, so Ian Chaudhary sir, you are a very experienced person in mortgages. Why we need credit report? Why we need it? क्रेडिट रिपोर्ट बेसिकली डिटरमिन करता है कि आपकी क्या फाइनेंशियल सिचुएशन है। आपकी क्रेडिट रिपोर्ट आपकी अच्छी हो तो आपकी इंटरेस्ट रेट, यू कैन गेट अ बेटर इंटरेस्ट रेट। Okay. It basically determines आपकी overall financial situation. That is very important. That's the first thing. Okay. Credit report is very important. Very important. And the reason why we asked, and Natalie just mentioned, we need your Equifax report is we don't want to pull it off. We don't want to pull up your credit report. Okay. Because if we pull it out, we need a consent. No matter what, we will have to do it. But we ask you to send it so you don't lose any points. Okay. Towards your credit report. जी, Gibran sir,
कार इंश्योरेंस के, कार का एक्सीडेंट हो गया, कार इंश्योरेंस के बारे में बताइए आप। कार इंश्योरेंस आप मैंडेटरी है, आपके पास कार इंश्योरेंस होनी चाहिए. यू शुड हैव योर कवरेजेस. स्पेशली आपके पास फुल कवरेज होनी चाहिए. उसमें आपको रेंटल भी अवेलेबल होता है, और समटाइम लोग थर्ड पार्टी ले लेते हैं, बट आई प्रेफर कि आप फुल कवरेज लें ताकि आप कवर्ड हो. अच्छा, ये फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी ये क्या चक्कर है, ये जरा एक्सप्लेन थर्ड पार्टी में ये होता है, देन इफ समबडी हिट्स यू एंड इफ इट्स नॉट योर फॉल्ट, तो आपकी गाड़ी कवर्ड है. एंड इफ इट्स योर फॉल्ट, देन यू विल नॉट गेट पेड फॉर योर कार. एंड फुल कवरेज में यू आर फुली कवर्ड, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. फुल कवरेज इज एक्सपेंसिव. Full coverage obviously a little bit expensive, not much. Not but much. थोड़ा सा So the preferable is that you should get the yes, full coverage, because you get a rental. If something happens to your car, you get a rental and all that stuff. It's very convenient. Okay, okay. So I will come back to my mortgage guys. Mitali is like mortgage. How you determine the interest rate? Or bank determine it, or you tell the client that he can get it this interest rate or that interest rate? What is the difference? Well, the lenders, they have their interest rates set already, but to figure out what the interest rate you would get, again, depends on your credit score. It all depends on where you fit in with each lender. Okay. Yes. Would you mind telling your number, My telephone your number? details again? Oh, my name is Natalie Senarth, mortgage agent under Mortgage Alliance, and I can be reached at 647-225-8745. नाज़रीन, ये मेरी टीम है, इसलिए मैं आपको कुछ सवाल इनसे पूछ रहा हूँ. अगर आपके ज़हन में क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछ सकते हैं. नेटली ने अपना नंबर बता दिया. ईएन चौधरी साहब, आप जरा इंट्रोड्यूस कीजिएगा. जी, मेरा नाम है ईएन चौधरी. आई वर्क अंडर सेंटर मॉर्गेजेस, Okay. एंड माय नंबर इज 416-826-4646, 416-826-4646. आप मुझे किसी वक्त कॉल कर सकते हैं ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स. I'm देयर टू हेल्प यू आउट. अच्छा, लाइन ऑफ क्रेडिट का आपने जिक्र किया. अच्छा, जी. लाइन ऑफ क्रेडिट क्या चीज़ है? इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट क्या चीज़ है? बेसिकली लाइन ऑफ क्रेडिट ये है कि आपके घर के अगेंस्ट आपको लेंडर पैसे दे रहे हैं. तो मैं आपको, मेरा काम है आपको आपके घर के अगेंस्ट पैसे दिलवाना. ठीक है, और एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आपको दिलवा सकता हूँ. अच्छा, If your credit score is really good, I can probably get it between 2 to 5 years to be an open loan. अच्छा, आपका कहने का मकसद ये है कि अप्रेजर होगी, अप्रेजर आके घर की वैल्यू देखेगा, उसमें से आप 20% साइड पे करेंगे. नहीं जी, फार्मूला बताइए. मैं आपको फार्मूला समझा देता हूँ. समझा भी देता हूँ कि how does this work. So basically, let's take an example. आपकी अप्रेजल आई है $1 million की. अच्छा, ठीक है, एंड आपके घर में है इक्विटी 5 लाख आपकी मॉर्गेज है. अच्छा, ठीक है, सो 25%, 75% लोन टू वैल्यू, ओके, सो 7.5 लाख बनते हैं, 750,000. ओके, सो आउट ऑफ द 25% साइड पे हो जाएगा, 2.5 लाख जो होते हैं 250,000, ओके जी. 7.5 रह गए पीछे. अच्छा, 5 लाख आपके बैंक का लोन है, तो 2.5 लाख तक आई कैन गेट यू. अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर क्रेडिट स्कोर एंड योर सिचुएशन, बट टू अ मैक्स ऑफ 300,000. ओके जी. ठीक है, so that's how it works. Again, interest rates determine, again how Natalie mentioned, credit score is very important. उसके बाद ही I can determine and tell you how. अच्छा, ये तो लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में थी. अभी हम पूछते हैं जबरान जी के पास, वापस जाते हैं. जबरान जी, ये जो कोई बंदा कहता है जी मुझे $400 महीने का पड़ा, कोई कहता है आई एम पेइंग $500 पर मंथ, समबडी इज सेइंग आई एम पेइंग $100. how you calculate the premium? इरफान में ये होता ही है कि every individual is different. किसी के पास टिकट है, किसी की रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो it depends कि आपकी एज क्या है, कितने पुराने आप इंश्योर्ड हैं इस कंट्री में. अच्छा, वो डिपेंड करता है सारा. तो वो सारा कुछ कैलकुलेट करता है सिस्टम जनरेट एवरीथिंग. तो इसलिए वी कैन नॉट गिव यू a quote by the word of mouth or something like that कि भी इतना है. डिपेंड करता है क्रेडिट हिस्ट्री पे, एक्सीडेंट हिस्ट्री पे, टिकट्स पे, टिकट्स पे, convictions वगैरह. conviction. अगर मेरे जैसा बंदा जी कोई टिकट नहीं, तो आपका रेट बड़ा अच्छा. और एज भी, और एज भी मैटर करती है, प्लस which एज area ऑफ माय एज और एज ऑफ माय लाइसेंस. age of your, since you're insured in this country. ओके, So age is basically on your license. How License- old your license No, is. how old your license is. Plus, the license can be old
100 years, but अगर आपने, if you started your insurance after 50 years, that's where the time starts. So basically, your How insurance, long how you you've had insured? insured. Okay, Yes. so How that's long what you it is. insured in And Canada. individual insurance, not if you're under someone else's insurance. That helps if you have like experienced driver in the household, and if you are a new driver, you should join that experienced driver. That helps you bring down your insurance. That's a very good question. So Nali, tell the people about something more about mortgage. Something. You are a very strong mortgage broker, so like people approach you Yes. and tell them about more about residential mortgage, how it works nowadays. Well, I mean, nowadays the interest rate has gone up, so people are a little hesitant, a little shy about getting a new mortgage. But you have to take into consideration as well that the house prices are a little bit lower. So what I would recommend is maybe, since the rate is a little bit higher, maybe lock into maybe a 1 year fixed Oh, really? mortgage, or stick with the variable Okay. until the rates are coming back down again. You have any Yes. question for Yeah. Are we expecting rates going up next month? Because USA is doing it, right? Well, so we just got a rate increase Yes. last week, week, Last week, Wednesday. yeah, Last week, beginning Wednesday. of this month, yeah. There's been talk that they're not going to raise it again, but like you said, Yeah. typically Canada follows the trend of the U.S. Yes. So because they're, So there might be raising one theirs, more. we're predicting There that there might be another one close to the end of the year. Yeah, Yes, that's what it November, December. So I guess if So- somebody's renewal is coming, they should contact you. They right should away, definitely. because- Definitely do Sure. something now, because while the rates are still Yeah. If the rates are still low, and let's say you do need funds, then I would suggest do consider a home equity line if you need funds, because once the rate goes even higher, yes. the market is going to go. The appraisal might not come that good, yes. right? Another thing I forgot to mention is that and I've seen it happen, is I have a lot of customers that approach me that they want to get they want to get a line of credit, but they don't mention that they've already taken private lending. Okay. So if you have a mortgage and you have taken equity already against your house, you need to disclose that information, because that will sooner or later show up. Because if I come up with a figure and I say, listen, this is what I can get you approved, and then I find out afterwards that there is already a second lien on the house, the numbers are going to change, or I might not be able to help you. So if you have taken a first or second mortgage, you have a first mortgage and you have a second mortgage on the house, you need to let us know. Mhm. My team needs to know. The lenders need to know. Okay. Or if you've even if you've done a proposal, for instance, Mm. if you've because if it's your primary residence, you can have a bankruptcy on your name. That information needs to be disclosed. If you have a proposal, there's a monthly fee that's going on. You're paying monthly towards it if it's not cleared. So I need to know that, because sooner or later it will show up, Yeah, and that will yeah, create yeah. problems. So it means that mortgage broker should know everything before it goes to We the bank. disclose everything Yes. because we are working for you. Okay. So if you should always have an agent, the agents will always work for you, not like other financial institutions. But the agent should know everything. We need to have all that information so we can give you the best So possible. basically, you have to have a confidence in your agent. Agent, yeah. That's Yes, right. yes. So And if- don't try to hide information, Yeah. because it will It come will to come light. back It to comes you. out And at the it end, may yeah. squash the deal. It does, Yes. and So- it happens. We've seen it happen. ओके सो नाजरीन देखें, ये डिस्कशन का मकसद ये है कि आपको पूरी हर बात से आपको बताना, आगाह करना, क्योंकि जब मॉर्गेज ब्रोकर या मॉर्गेज एजेंट जिस तरह ये दोनों हैं, और ख़ास तौर पर मैं उनका भी जिक्र करूँगा, उनसे भी आप कोई चीज़ हाइड नहीं कर सकते, किसी से भी नहीं कर सकते, लेकिन हाइड करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब ये बैंक में जाएंगे आपका केस लेके और सारा काम हो जाएगा और बैंक डिस्कवर करेगा कि आपने ये कब डिले पेमेंट की है, ये फलाना किया है, ये कुछ किया है, तो उस वक्त डिक्लाइन होने का खतरा भी बढ़ जाता है और फिर उसको कवर करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है. इफ यू टेल देम द फैक्ट्स बिफोर हैंड, so they should know and they should prepare for that thing. Am I right? Absolutely. Absolutely. ठीक है जी. Disclose करना है आपके लिए बेहतर ही है हर चीज. शुरू में डिस्क्लोज कर दें तो it makes it very easy for us to do our job. वो फाइल भी फिर एक्सटेंड नहीं करते ना, Extend, yeah. टाइम नहीं करते, आप वेस्ट करते ज़्यादा उसमें. Especially if you have a deadline. If you are working on a very strict deadline, you have a timeline to Become follow, quicker then. for sure. अभी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, right? Okay.
थैंक यू वेरी मच। Thank you. इमरान साहब बहुत Thank you. शुक्रिया। Very fun. मिताली थैंक यू वेरी मच। इयन चौधरी साहब बहुत शुक्रिया जनाब। Thank you for having us Thanks for फिर over. मैं having दोबारा us. तारुफ करा दूं, इयन चौधरी साहब इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट के बड़े एक्सपर्ट हैं। आपको इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट $3 लाख तक की लेके दे सकते हैं, कॉल कीजिएगा। मिताली जो है मॉर्गेज स्पेशलिस्ट है, शी इज डूइंग मॉर्गेजेस फॉर आवर टीम and she can do good things for you, and call her, you know the number she told. And जिब्रान सलीमी साहब कार इंश्योरेंस ऑटो इंश्योरेंस के माहिर हैं, आप इनको कॉल कीजिए और इंशाल्लाह इरफान मलिक को इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच, जरूर हाजिर होंगे। Thank you. खुदा Thank हाफिज। you. Thank you. you. I don't know.